cyclonic storm to hit Bengal coast. What is your take on it? The severe cyclone storm Rimal lay centered over North Bay of Bengal, about 200 kilometers south of Canning in the noon of today. Currently, the wind speed is about 90 to 100 kilometers per hour, gusting to 110 kilometers per hour around the center of the cyclone. It is moving nearly northward. It will continue to move nearly northward and cross Bangladesh and adjoining West Bengal coast between Sagar Island and Khepupara of Bangladesh, close to southwest of Mongla, as a severe cyclone storm with wind speed of 100 to 120 km per hour, gusting to 135 km per hour. Under its influence, already the rainfall has started over West Bengal coast. We have given red color warning for West Bengal coast, where we are expecting heavy to very heavy rainfall over all the coastal districts, including South and North 24 Pargana, East Medinipur, Howrah, Hubli, Kolkata, and Nadia districts. Rainfall can exceed 20 to 25 centimeters today. We are also expecting wind speed of 100 to 120 km per hour over South and North 24 Pargana, 70 to 80 km per hour, goes to 90 km per hour over Kolkata, Howrah, and Hubli districts, 60 to 80 km per hour wind speed over East Medinipur districts, especially along the coastal belt. We are also expecting 1 meter tidal wave above the astronomical tide to inundate the low-lying areas of South and North 24 Pargana districts. All these three hazards of heavy rainfall, wind, and storm surge will occur simultaneously. From afternoon, the peak intensity of rainfall will increase. Peak intensity of wind will increase from evening, and that will continue till early hours of 27th. So under its influence, there could be the breaking of tree branches, uprooting of trees, large-scale damage to thatched huts, and also the hoardings can flow, dead limbs can flow. So these breaking of trees or uprooting of trees can lead to disruption in power and communication lines. So therefore, we have advised the people who are staying in hotments, kacha houses, asbestos houses, tin houses, to move to the safe places. People should remain calm, be in safe place. They should not go outside till 27th early morning. Sir, also the districts which you have mentioned, like Calcutta and Hubli, Howrah, the districts which you have mentioned, what major advisory you want to give for the safety of the people? The major advisory goes like this. People should not move outside. People should be in safe place. Those who are in hotments in these coastal districts, they should move to the safe places. And nobody should go with the vehicles because of the strong winds and rainfall. There could be accidents in the transport sector. Even we have advised for regulation of the airport activity and the train activity. Over the sea area, condition is high to very high. There are very high waves. So therefore, no fishermen should go into the sea, and the ships flying in North Bay of Bengal and adjacent Central Bay of Bengal should be regulated. We also want to all the ports in North Odisha and West Bengal coast. We have given signal number 8, which is associated with severe cyclone storm for the West Bengal ports. We have also given warning for the onshore and offshore industries along the coastal lines, and all should take precautionary measures, avoid the disturbed area, be in the safe place, listen to IMD's bulletin, don't believe in rumor, cooperate with disaster managers, and hence let us face this hazard with courage to save ourselves
and to minimize the loss of property. Sir, any advisory has also given to the aviation sector? Yes, every 3-hour bulletins are being issued. For international aviations, we are issuing the bulletins every 6 hours, and for our national aviation also, the bulletins are being transmitted. सर वहीं अगर हम बात करें बंगाल में जिस तरीके से साइक्लोन हिट करने वाला है, किस तरीके की एडवाइजरी आप बताएंगे लोगों के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए? जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म आज मिडनाइट तक बांग्लादेश और इसके आसपास वेस्ट बंगाल तट को पार करने वाले हैं, इसके प्रभाव में हम heavy to very heavy rainfall at a few places and extremely heavy rainfall exceeding 20 to 25 centimeter हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसे कि साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट मेदिनीपुर, नदिया डिस्ट्रिक्ट, हावड़ा, हुगली एंड कोलकाता। इन एडिशन टू दैट हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मीटर ऊंचाई का समुद्रिक लहर आ सकता है साउथ और नॉर्थ 24 परगना में ईस्टर्न मैग्नेटाइट के ऊपर, और जो विंड स्पीड है ये लगभग 100 से 120 किलोमीटर/आवर रफ्तार में आज इवनिंग से कल अर्ली आवर्स तक हो सकता है साउथ और नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। 60 टू 80 kmph विंड स्पीड हो सकता है ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, और 70 टू 80 गोस टू 90 kmph विंड स्पीड हो सकता है हावड़ा, हुगली, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में। मेदिनीपुर जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है वहां भी विंड 60 टू 80 किलोमीटर/आवर होने का संभावना है। ये सभी विंड्स में डैमेज होता है, जैसे ट्री ब्रांचेस फॉलिंग, अपरूटिंग ऑफ ट्रीज, बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन लाइन्स, ये सभी हो सकता है। और जो हॉटमेंट्स है, कोस्टल हॉटमेंट्स है, वो लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। इसलिए जो थचड़ हाउस में है, टीन हाउस में है, एस्बेस्टस हाउस में है, कच्चा हाउस में है, वो सभी सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए, और रास्ता में कोई गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सी एरिया है वो भी डिस्टर्ब है, वहां कोई शिप्स ऐसे चलना नहीं चाहिए, टोटल सस्पेंशन होना चाहिए फिशिंग ऑपरेशन, और शिप से भी रेगुलेटेड होना चाहिए। और ऑफशोर इंडस्ट्रीज और ऑनशोर इंडस्ट्री को भी हम वार्निंग दिए हैं, वो भी उनका एक्टिविटी को रेगुलेट करें। इसके साथ साथ जैसे नेशनल हाईवेज, इंडियन रेलवेज, वो सभी को भी इंफॉर्मेशन जा रहे हैं, और एविएशन सेक्टर को, एयरपोर्ट्स को भी इंफॉर्मेशन जा रहे हैं कि जैसे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जाए, जैसे कि हम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी को कम कर सकें।